अफसोस होता है भारत का फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार का अफसोस होता है यार। बुरा ना मानना हिंदू भाइयों, आप में से कुछ लोगों का जो वाकई एक हवा देते हैं किसी दूसरे को उंगली उठाने के लिए। इन लोगों ने 1000 साल का इतिहास उठा के देख लो तो सोमनाथ को लुटवाने से लेकर इस परंपरा, इस संस्कृति को लुटवाने तक और आज तक उसका मजाक उड़ाने तक कोई कसर नहीं छोड़ी। फिलहाल ये लोग थोड़े चुप हैं, थोड़े डरे हैं, थोड़े घबराए हैं। लेकिन जैसा मैं कहता हूं या जैसा मैं चाहता हूं कि लाठी हो हाथ में, तो इनको मैं बताऊं कि भारत में बोलने के अधिकार की क्या सीमा होती है और संस्कृति का अपमान या मजाक उड़ाने की सीमा क्या होती है। सीमा में हर चीज अच्छी लगती है। काश हाथ में लाठी हो तो डंडे मार मार के इनकी पीठ पर सबके भारत माता की जय लिख दूं। हुआ क्या बताता हूं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? धत तेरी की गटर छापो। और गटर छापो से मेरा मतलब पिछले वीडियो में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं भैया, कोई एक वर्ग विशेष नहीं है। यहां कम से कम 30-35% गटर छाप हैं। उनमें से कुछ ने यह सवाल उठाया कि जब चंद्रयान लॉन्च होने वाला था उससे पहले एक टीम विशेष मंदिर गई आशीर्वाद लेने के लिए प्रभु का, तो मजाक उड़ाया क्या ये साइंटिस्ट हैं, क्या धर्म और साइंस एक है, वगैरह वगैरह। तो इस पर ज्यादा क्या बोलूं, इतनी चिड़ मची कि ढूंढते कंपाइलेशन किया। कोई वीडियो का मैसेज क्या है ये आप लोग भी जानते हो। वीडियो का एक ही मैसेज है कि हाथ में लाठी आ जाए तो इनके पीठ पर भारत माता की जय लाठी मार मार के लिखते हैं, लाठी मार मार के टकने तोड़वा दो इन लोगों को। फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी जो सनातन ने दे रखी है भाई, ये काबिले तारीफ भी है और लानत के योग्य है। ऑक्सीमोरॉन, तारीफ के लायक भी है और लानत के लायक भी है जो लिबर्टी ऑफ स्पीच सनातन ने सनातनियों को दे रखी है। अब कुछ कहेंगे ये सनातनी नहीं है, ये वो नहीं है, ये कहने की बातें हैं यार। दूर से जब एक परसेप्शन बनता है ना तो सभी मुसलमान हैं, सभी सिख हैं, सब सनातन हैं। तो इसकी डिटेल्स में ना जाते हुए मेरा एक मेहनत की है ये कंपाइलेशन देखो। How do ancient Indians know the distance between Earth and Sun before NASA? In recent decades, NASA has accurately determined the distance between Earth and the Sun to be 95 million miles. Despite numerous attempts by astronomers to predict this distance, they were unable to calculate an approximation that came even close. However, it is surprising to know that an Indian poet and saint, Tulsidas, had knowledge of this distance around 500 years ago without any modern technology. Tulsidas was a Ramanandi Vaishnava Hindu saint and poet who mentioned the closest distance between Earth and Sun in his famous work Hanuman Chalisa. He wrote that the Sun is approximately 96 million miles away from Earth. This is yet another indication of the ancient knowledge of India, which continues to amaze people around the world to this day. Interesting. और आगे देखते हैं सनातन और साइंस का क्या गठजोड़ है। The ancient Hindu text, the Mahabharata, is really very intriguing. Now historians agree that it was written at least about 3,000 years ago, but shockingly, there are some depictions in the text which defy our modern understanding. First of all, I want to make it clear that these ancient texts like the Ramayana and the Mahabharata cover a vast geographical area, like the whole Indian subcontinent. But according to researchers, it is not possible for a person to go around the entire subcontinent and describe the flora and fauna of those places with accurate details, unless they had some advanced technology thousands of years ago. Now, here is an extremely fascinating description in the Mahabharata, when a king by the name of Sulwa attacks Krishna's Dwarka. It is written, Sulwa came with a raging flying machine with cities inside it. The flying machine was so huge that it blocked the sun from people's view. Then it hurled fire and thunder at them. So, could it be possible that the author wrote what he really saw with his own eyes? In the movie Interstellar,
we see the main character Cooper travel through a wormhole. The concept of a wormhole is not new. It can be traced back to ancient Indian scripture. The Rig Veda mentions Indra's road and Indra's net, which can be interpreted as wormholes. The Upanishads also mention vimanas, flying cars that could travel between different planes of existence. The idea of time being fluid and non-linear is also mentioned in the Vedas. Similarly, in Interstellar, Cooper experiences time dilation where time moves at different rates depending on his location. The concept of a higher power controlling the universe, referred to as the force that governs all things in the movie, is also a prevalent theme in the Vedas. The concept of the fifth dimension in the movie is similar to the idea of a higher consciousness in the Vedas. The movie also touches upon the power of love, which is a prominent theme in the Vedas. The Vedas often highlight the interconnectedness of all things, which is also a central theme in Interstellar. Management has been recognized as a science since the 1950s. One of the fathers of modern management is Peter Drucker. But didn't management exist in India even before the 1950s and the Drucker era? As a nation, we have over 5,000 years to our credit. Did we not have management scientists in our country before the 20th century? In the ancient Indian scriptures, Ramayana, Mahabharata, the various Upanishads, we found brilliant discussions of management strategies. Acharya Chanakya's management philosophies, principles, were used to make modern principles and are being used worldwide. The Vedic literature contains descriptions of advanced scientific techniques, sometimes even more sophisticated than those used in our modern technological world. Modern metallurgists have not been able to produce iron of comparable quality to the 22-foot-high iron pillar of Delhi, which is the largest hand-forged block of iron from antiquity. Telepathy is the ability of a person to send a message using only his mind to a different person who is located at a distance. Various ancient Hindu texts had mentioned this phenomenon thousands of years ago. However, the skeptics have always been trying to discredit it as impossible. So, are the skeptics right? In the year 2014, researchers from the Starlab Institute, Axelum Robotics, and Harvard Medical School published their findings which shocked their peers. In their experiments, they had proven that they could detect and identify exact words from the thoughts coming out of the subject's brains. It was an amazing revelation because it opened up new possibilities of brain-to-brain communication. Next, the researchers successfully transmitted a message from a person sitting in France to a person sitting in India, without the subjects even typing or saying a word. They say it is only the beginning of research into this field. But how did the ancients know about this? The Sanskrit word Veda, meaning knowledge, wisdom, is derived from the root word vid, means to know. So it is not surprising that science is an integral part of them. Production of hydroelectric power is described in the verse Purusha Sukta. Many people sing this every day with devotion, but they may not have an idea about it. It has been so made by a special encryption technique called Katapayadi Sankhya. Only those with experience in splitting words and sentence differently, parsing, than what is taught in regular grammar class can understand them. I think this was done with the intention of protecting intellectual property. Interpretations of the Vedic texts depends on the reader as well. Apart from a good exposure to Sanskrit, one has to have a grounding in Indian philosophical systems, not only the Vedas and the subject matter he wants to look for in the Vedas. You know, India is a land of rich culture and ancient history, with many groundbreaking discoveries and inventions that have shaped the modern world. Let's get started. Our first discovery is the Hindu numeral system. Not many realize that the numeral system we use today came from India. Our next discovery is carburized steel. India is one of the pioneers in metallurgy and had been producing top-quality steel way back, 2,000 years before Michael Faraday demystified the real process. India's influence on Western philosophy is our third discovery. Many historians talk about the influence of India in ancient Greeks and Romans. The use of cotton textiles for clothing is a revolutionary Indian contribution to the world. Back in the days, the Greeks were still wearing animal skin until they found the cotton industry in India when Alexander the Great was conquering the world. Our fifth discovery is democracy. Historians know about the ancient Indian Republic of Vaishali, which dates back to 600 BCE, almost 100 years before the institution of Athenian democracy. Indian scientists have also made significant contributions to the world, from C.V. Raman's discovery of the Raman effect to Srinivasa Ramanujan's contribution to mathematics. What is the sound of this universe and how it is linked with ancient Indian beliefs? The science of this universe had a very deep connection with Hinduism.
The concept of the Om sound and its connection with the creation of the universe is deeply rooted in Sanatan Dharma. According to ancient Indian scripture, Lord Shiva created the Om sound before the universe came into existence. Science has confirmed that the sound of the universe is Om, and modern technology has confirmed that the entire universe vibrates with an Om vibration. However, we cannot create the Om sound by chanting it, but we can produce a vibration similar to the vibration already present in the universe. This fact was known to ancient civilizations, and that is why Om is used in most shlokas and mantras. Therefore, the science of this universe has a deep connection with Sanatan Dharma. Most people think that the ancient Indian texts are nothing but the works of fiction, but let me present you with a fact, which will make you rethink about the history of human civilization on this planet. The Padma Puran is an ancient Hindu text written by Vyas, the author of the Mahabharata. In the Padma Puran, he writes, "There are 8.4 million types of different species living on this planet, and remember, this text was written thousands of years ago. But the shocking thing is, our modern scientists have been able to identify and describe only 1.3 million types of those species, and they estimate there could be about 8 to 8.7 million different types of species inhabiting our planet. So, what do you say about that? How did the author of the Padma Puran learn such a mind-boggling fact about Earth's vast ecology?" महाभारत में संजय ने वर्ल्ड मैप बताया था। क्या आप सब महाभारत को मिथ्या मानते हैं या एक इतिहास? अगर आपको अभी भी इसके ऐतिहासिक होने का प्रमाण चाहिए तो एक चीज शेयर करती हूँ कि एक समय पे धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है। इस पे संजय ने कहा था कि पृथ्वी दो जुड़े हुए पीपल के पत्ते और एक खरगोश के जैसे दिखती है। आप ये बात पर हंसेंगे, पर अगर आप इसको उल्टा करके देखें तो आपको आज की दुनिया का मैप दिख जाएगा। अगर वो समय की साइंस का दौर एक आधुनिक दौर नहीं था तो वर्ल्ड मैप की खोज होने से पहले भी इतना सटीक मैप कैसे बन पाया? तो सुना साथियों, और जो मैंने आपको दिखाया है ये बूंद बराबर भी नहीं है। अब कुछ लोग इसका ये इंटरप्रिटेशन करेंगे कि भाई रिजवान भाई सनातनियों की या हिंदू धर्म का बड़ा सम्मान करते हैं। यहां बात सम्मान अपमान की है ही नहीं। बात यह है कि जो सनातनी होते हुए सनातन का अपमान करते हैं और इनडायरेक्टली भारत और भारत की संस्कृति का अपमान करते हैं, उनको तर्क के आधार पर कुछ ना कुछ बताना पड़ता है कि तुम कितने बेशरम हो या कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे ऊपर लाठी नहीं चल रही है, या ये पूरा सिस्टम इकोसिस्टम कितना बदकिस्मत है कि उनके ऊपर लाठी नहीं चल रही है। अब एक सवाल उठेगा, इतनी साइंस, ये साइंस वो साइंस, तो यार तरक्की कहां है? तरक्की का दौर वेस्ट में कब आया? सारा तरक्की का दौर पूरी दुनिया में मात्र 1000 साल से आया। यूरोप की तो डार्क एजेस कहलाती थी। यूरोप में था क्या? जंगल थे, पहाड़ थे, बर्फ थी, कपड़ा पहनने की तो तमीज नहीं थी। आप वाइकिंग्स उठा के देख लो, समारिटन्स उठा के देख लो, कितने हुन्स उठा के देख लो, कितनी रेसेस उठा के देख लो। तो पूरी दुनिया में तरक्की का जो ये पूरी नॉलेज का जो चैनलाइजेशन हुआ है इन मॉडर्न साइंस, जैसे एक रेजोवॉयर होता है, रेजोवॉयर से क्या खेतों की वेजिटेशन की कैनाल सिस्टम उनको पानी पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। उसके लिए आपको एक कैनाल सिस्टम बनाना होता है। तो भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारत की संस्कृति, साइंस, ये सब एक रेजोवॉयर था। उस रेजोवॉयर को चैनलाइजिंग पूरी दुनिया में मात्र पिछले 800-900 साल ही में हुई है। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जितने भी इन्वेंशन है उठा के देख लो। अब मैं क्या बताऊं दिखाने के लिए कि मेरी नॉलेज है, उठा के देख लो। जब इस रेजोवॉयर ऑफ विजडम, नॉलेज जो मैं आपको दिखा रहा हूं बूंद बराबर, अरे क्योंकि एक सवाल उठेगा कि भैया फिर हम सबसे आगे साइंटिफिक क्यों नहीं हुए? बहुत सही सवाल है, सही सवाल है, इसका जवाब भी देना चाहिए। हम इस मारे नहीं हुए क्योंकि भारत में जब ये चैनलाइजेशन का टाइम आया, जब हुआ इस रेजोवॉयर से कैनाल बनाओ ताकि इरिगेशन हो और वहां पर वेजिटेशन निकले, फल फूल निकले, ठीक, जैसा एक नॉर्मल आसान भाषा में समझा रहा हूं। तो उस दौर में इस देश में इन्वेजन शुरू हो गए।
टैक्सला, नालंदा तो 2 हैं, शारदा 3 हैं, ऐसे कम से कम 10-12 एजुकेशन की सीट्स जहां पर जिनको सत्यानाश कर दिया गया, जला के हजारों किताबें, साइंटिफिक चीजें जला दी गई या एक्सपोर्ट कर दी गई उस जमाने में यहां से। और आगे चलते चलते जब वो दौर था जब दुनिया प्रोग्रेस कर रही थी, तो यहां का जो विजडम था वो कूड़े के डब्बे में पहुंच चुका था, और यहां पे सनातनी अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ रहा था, अपनी पहचान के लिए लड़ना था, और लड़ाई शुरू हो गई थी सर्वाइवल की। तो एक तरफ जहां एक डैम था जिससे पिछले 1000 साल में यहां पर कैनाल्स निकलते और वो पूरे भारत और पूरी दुनिया को इरिगेट करते ताकि वेजिटेशन होता, उसी दौर में यहां रेजर्वोयर ही सूखने की नौबत आ गई। इसीलिए मैं कहता हूं भारत के विजडम और संस्कृति का जितना इर्रिपेरेबल, इर्रिवर्सिबल लॉस हुआ है, ये सनातनियों को भी नहीं पता कि लॉस हुआ कितना है। और अगर वो अपने अस्तित्व के लिए न लड़ना शुरू करते तो इसी रेजर्वोयर की नॉलेज को चैनलाइज करके विकास और साइंटिफिक स्टडी के लिए भारत जाता, जहां पीछे रह गया। क्योंकि जब आदमी अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा, जब रेजर्वोयर सूख रहा है, मछलियां मर रही हैं, उसके लिए लड़ेगा, तो वो उसमें से ज्ञान की क्या कैनाल खाक निकालेगा। और जो 1000 साल पहले लड़ाई शुरू हुई इस अस्तित्व को बचाने के लिए, वो आज तक चल रही है। इसीलिए जो ये कहते हैं कि ये साइंटिस्ट मंदिर क्यों पहुंच गए, हाथ में लाठी आ जाए तो उनकी पीठ पे भारत माता की जय लिख दूं। जय हिंद, वंदे मातरम। खुदा।